Today we'll be moving on to your topic number 6C of unit number 4 Edexcel International A लेवल फिजिक्स। हमने आज मैग्नेटिक फोर्सेस कवर करना है पार्ट नंबर 3 ऑफ 6C में, और उसके बाद पार्ट नंबर 4 में वी आर गोइंग टॉक अबाउट द फेराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड्स की बेसिक्स कवर किए हैं। हाउ डज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, हमने करंट की डायरेक्शन में देखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी, हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद ईच अदर। जहाँ पे करंट फ्लो करेगा वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हाउ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एज वेल। यू हैव आल्सो यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एज वेल टू एक्सप्लेन द direction of the magnetic force produced as well. So today we'll be using the equation F is equal to BIL sin theta। B आपको पता है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। B हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, अगर आप यहाँ पे देख लो। So in the previous class we talked about B, which is your what, magnetic field strength। ये देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो, वी कॉल इट बी, जिसको हम टेस्ला के अंदर मेजर करते हैं। आई होप यू कैन रिकॉल दैट एज वेल। एंड देन वी यूज द मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे हम अप्लाई भी करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू द चार्ज पार्टिकल्स दैट आर ऑलरेडी मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, एक तो इक्वेशन नंबर 1 होगी दैट इज बी आई एल साइन थीटा, एंड देन देयर इज अ सेकंड इक्वेशन दैट इज नोन एज BQV sin theta for a charged particle moving in a magnetic field. The strength of the force F on the wire which has a current I through it in a magnetic field is given by force is equal to magnetic field flux multiplied by current multiplied by the length of the conductor into sin theta। क्योंकि sin theta क्यों, क्योंकि रिमेंबर मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है। when magnetic field lines are perpendicular acting on any area, only then we can say that this is a maximum magnetic flux। so this is how you calculate the strength of a force ऑन अ वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है। एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है, और अगर वो वायर, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, अगर इसमें मैं एक वायर प्लेस कर देता हूँ जिसमें करंट भी राइट की तरफ जा रहा है, तो दिस वायर विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन एनी वन ऑफ द डायरेक्शंस। एल क्या है, L is the length of the wire within the field and theta is the angle that the current makes with the lines of the magnetic field. For simplicity, we will only consider uniform magnetic fields in which the field lines are all parallel as well. And it is common to set up many situations in which the angle is theta is 90। जब sin 90 होगा तो that will give you the maximum magnetic field flux as well। sin theta है maximum क्योंकि sin 90 जब होगा that will be equal to 1। so this reduces the formula to F is equal to BIL। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया where the magnetic fields are already acting perpendicular to the area, you can remove the sin theta because sin 90 is equal to 1। तो आप उसको इक्वेशन से रिमूव करके F is equal to BIL यूज कर लोगे। Hanuel sets up a jumping wire demonstration where he uses a wire with a current of 2 ampere running through it and a pair of magnets that have a magnetic field of 0.5 millitesla। He is not too careful in setting up, and 5 centimeter of the wire actually hangs across the field at an angle of 80 degree। वो कह रहा है एंड इफ द मास ऑफ 9 ग्राम्स हाउ फास्ट विल इनिशियली एक्सेलरेट। तो व्हाट आर यू गिवन ओवर है, अब हम कुछ कनेक्ट करते हैं। वी आर गिवन द लेंथ, वी आर गिवन द करंट, वी आर गिवन बी एज वेल, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, वी आर गिवन थीटा एज वेल, वी आर गिवन मास एज वेल, और हमने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो अगर हम पहले फोर्स निकाल लें, फोर्स क्या होता है, हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, BIL साइन थीटा। ठीक है, यू आर गिवन बी एज वेल, यू आर गिवन करंट एज वेल, यू आर गिवन लेंथ एज वेल, और आपको थीटा भी गिवन है, तो साइन 80 कर लें। दैट्स वे यू विल कैलकुलेट योर एफ फर्स्ट। जब एफ आ जाए तो यू कैन यूज द न्यूटन सेकंड लॉ विच इज एफ इज इक्वल टू एम ए, और वहां पे अगर आप ए को सब्जेक्ट बनाओगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ओवर एम। तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू टेंस टू पावर -3। A consequence of the expression F is equal to BIL is that a motor can be made more powerful as well। अगर आपके पास कोई डीसी मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, they are all also based on the magnetic field mechanism। तो you can actually make a motor more powerful as well by number one, increasing the current, increasing the number of turns of the wire in the motor, and increasing the magnetic field within the motor as well। The magnetic field strength is usually maximized by making the coils core of soft iron।
Some motors also use electromagnets to provide the field, and these can also be strengthened by increasing the current through them. तो ये तो आपके पास हो गया जी कि फोर्स ऑन वायर्स। ठीक है, फोर्स ऑन वायर्स के लिए वी हैव स्टडीड द इक्वेशन नंबर 1 विच इज व्हाट, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। अब अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल्स में यू हैव प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, बहुत से डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। फॉर दैट अगर उन पे यू वांट टू कैलकुलेट द फोर्स, तो वी विल मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी। द मोटर इफेक्ट होता क्या, व्हाट इज द मोटर इफेक्ट, वी डिड इट इन प्रीवियस क्लास। Motor effect is when a current carrying conductor or a wire experiences a magnetic force and a magnetic field। और यही चीज चार्ज पार्टिकल के साथ भी होगी, that is moving at right angles to a magnetic field and it also experiences a force on it at right angles to its direction of motion। और अगर आप right angles पे लोगे तो obviously at that time b q v sin theta ही हो जाएगा। If the charged particle is constrained like an electron and a current in the wire, the force will transfer to the wire itself। वायर के अंदर भी क्या फ्लो हो रहा है, करंट। और करंट भी बेसिकली क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बात तो वही हो जाएगी। इट्स डायरेक्शन विल चेंज एंड इट विल ट्रैवल अ सर्कुलर पाथ वाइल्स द मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभार फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटर हुआ तो उसका पाथ भी चेंज हो सकता है इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट विल ऑब्जर्व एज वेल। क्योंकि क्यों चेंज होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर मस्ट हैव बीन अ फोर्स that has acted on a charged particle when it entered the magnetic field। The direction of the force acting on a charged particle moving in a magnetic field can be found using Fleming's left hand rule, and we must be very careful with the current direction though, because a negative charge moving in one direction is a current flowing in the opposite direction। याद रखें that current always flows from positive to negative, whereas electrons always flow from negative to positive। तो उसमें reverse याद जरूर रखिएगा। The strength of a force on a charged particle moving across a magnetic field can be calculated by F is equal to BQV sin theta। B आपको ऑलरेडी पता है इज मैग्नेटिक फील्ड। Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो अगर वो पार्टिकल लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, what is the charge of an electron, -1.6 इंटू टेंस पावर -19। और v आपके पास क्या है, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी, कि वो किस वेलोसिटी उसकी किस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये v है, ये शायद मैग्नेटिक फील्ड हो। एंड देन यू कैन यूज द इक्वेशन एज वेल। अगर इफ द एंगल थीटा इज 90, देन आप बी क्यू वी के बजाय इक्वेशन को सिर्फ बी क्यू वी साइन थीटा के बजाय यू कैन यूज बी क्यू वी only as well, because sin 90 is equal to 1। As the force on a charged particle is always at right angles to the direction of its velocity, sometimes that magnetic force can also act as a centripetal force and the particle will follow a circular path। कभी कभार that magnetic force can produce a centripetal force for that particle as well। मैंने पहले बताया था दैट सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स नहीं है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट। सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ड्यू टू अदर फोर्सेस ना। समटाइम्स द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड ड्यू टू आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, समटाइम्स द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। ओवर हियर द सेंटीपिटल फोर्स, because an electron enters the magnetic field and moves in a circular path, that centripetal force is being provided by the magnetic force। So can we say that the magnetic force is equal to the centripetal force? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, because as the charged particle's velocity is constantly changing along a circular path, it is being accelerated by the magnetic field as well, which means that given in the right combination of conditions, a moving charged particle could be held by a magnetic field continuously orbiting a central point। This is the principle by which artificially generated antimatter is also contained to save it for annihilation, जो आप अभी आगे यूनिट 5 के अंदर भी पढ़ोगे। सेम इज द केस आपका जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री भी आपको याद होगी, वेयर वी यूज टू आइडेंटिफाई अननोन केमिकल्स एज वेल इन केमिस्ट्री। वहाँ पे अभी आपकी जो फॉरेंसिक साइंस या क्राइम सीन में डिटेक्ट करना होता है, वेर यू हैव टू चेक दैट व्हाट इज दिस अननोन मटेरियल एंड ऑल। और वो आपको याद होगा दैट वेयर डू वी एंटर द वेपराइज सैंपल्स, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एंड देन दैट वेपराइज सैंपल इज एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेट होके फिर वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनाता है। ओवर हेयर द सेम मैकेनिज्म इज बिंग यूज, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूज हो रही है ना, mass spectrometer as well। A chemical to be identified enters the machine, it is first ionized, then it is accelerated, electric field उसकी speed बढ़ाएगी, it will then experience a force and then it will change direction based on its composition as well।
So we can say that when it changes its direction, अगर वो circular path में ले रहा है, so that means that the force on a charged particle moving at right angles to a magnetic field is given by what? F is equal to B Q V. Centripetal force क्या होती है? mv square over r that we have done in the very first topic. तो can we say that magnetic force is equal to the centripetal force? अगर आप दोनों साइड से एक एक v कैंसिल कर दोगे तो पीछे क्या रह जाएगा? We can write it as this as well. That q over m is equal to v over b r. यहाँ पे तो v खत्म ही हो गया, यहाँ पे एक v रह जाएगा. Similarly, you can also make it equal to kinetic energy as well. आपको पता है कि energy जो होती है that is what? Voltage into coulomb charge, right? So अगर हम इस kinetic energy की जगह voltage into coulomb charge लिखते हैं, अब ये कहाँ से आया? Voltage is equal to energy per coulomb charge, right? तो I just rearrange the equation. तो here you can see that energy is equal to voltage into coulomb charge, and here अभी आप इसी वाले फॉर्मूले को यूज करके you will see many questions where you can find the charge to mass ratio as well and identify the particles involved as well. आपको B दिया होगा, रेडियस दिया होगा. तो इसी क्वेश्चन को अगर आपने ये देख लिया, लेट्स से एक्सेलरेटर है. जब भी कोई एक्सेलरेटर लगा होगा इट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, और जब भी चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती है इट ऑल्सो इंक्रीजेज देयर काइनेटिक एनर्जी. एंड व्हेन इट इंक्रीजेज देयर काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो बाई क्यू वी एज वेल. और अगर इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके यू मेक वी द सब्जेक्ट दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू वी ओवर एम. इसी टू क्यू वी ओवर एम को अगर आप इसकी जगह पुट कर दो, v की जगह, लुक एट दिस v, तो क्या बन जाएगा? देखो सब कुछ वही है, q भी उधर ही है, m भी उधर ही है, b इंटू रेडियस भी उधर ही है, ठीक है. और v की जगह हमने क्या डाल दिया? टू क्यू वी ओ इंटू ओवर m. ये v वाला ये वाला वोल्टेज है. इज एवरीथिंग क्लियर ओवर है? ये सारी डेरिवेशंस एक दफ़ा यू राइट इट इन योर कॉपी, तो आपको क्लियर हो जाएगा विच फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज वेयर. स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए यू विल हैव टू स्क्वायर ऑल ऑफ द साइड्स, और जब आप स्क्वायर करोगे साइड्स तो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन दैट यू विल बी आस्क्ड टू मेक इन द पेपर एज वेल. By changing the accelerating voltage and the strength of the electromagnet, we can also identify the various chemicals contained within a sample as each of them is measured by the detector. The intensity of the current in the detector can also indicate the proportion of a given chemical within the sample. ये देखिए, over here now you are given B as well, you are given V as well, ठीक है. You can also see that they are talking about the isotopes. हमारे पास Q भी है, ठीक है. हमारे पास मास भी गिवन है आइसोटोप्स के ऊपर. टू टाइम्स वोल्टेज भी हो जाएगा बिकॉज वी हैव द वोल्टेज गिवन टू अस. वी हैव बी एज वेल. थ्री टेस्ला है तो थ्री स्क्वायर कर ले. और आपके पास जो क्यू है, क्यू तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था. माइनस आइंस भी है ना, तो माइनस आइंस मीन्स -1.6 टेस्ट और -19. सारा का सारा वही फॉर्मूला है दैट यू हैव टू डिराइव, पुट इन ऑल द वैल्यूज. और आप दोनों आइसोटोप्स के लिए यू कैन कैलकुलेट द रेडियस. रेडियस किस चीज़ का? द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट दे हैव बोथ टेकन. एक का रेडियस शायद बड़ा हो, एक का शायद छोटा हो. सो द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द आइसोटोप्स दैट दे टुक इन अ स्पेक्ट्रोमीटर विल बी डिफरेंट. क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर हम करते क्यों हैं? टू फाइंड द अननोन कंपाउंड. अगर हम कंफ्यूज हैं कि क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप है, वी परफॉर्म स्पेक्ट्रोमीट्री. स्पेक्ट्रोमीट्री में बोथ ऑफ द कंपाउंड्स विल हैव डिफरेंट radius of their circular path. So to in order to find the difference in the radius, हम ये वाली equations यहाँ पे यूज करते हैं. And the only difference in both of these is what? आपने जब mass लिया है ना, वो आपने दोनों का अलग ले लिया है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल द सेम, ठीक है. ये आपके पास mass ऑफ वो है ना, प्रोटॉन है. आपने देखना था कि कितने न्यूक्लियॉन्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव ओवर हेयर. यहाँ तक क्लियर है? हैव यू रिटन डाउन एनी इक्वेशंस? कुछ समझ आ रही है? लेट मी नो.